In this video, I'm going to present you with a breakdown of what Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah had envisioned for Pakistan and the reality today. Now, I've got a few pointers जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा and हम देखेंगे कि जो Quaid-e-Azam का ख्वाब था वो क्या था, उन्होंने अपनी स्पीचेस में क्या कहा और आज की रियलिटी में क्या हो रहा है. At number 1, I've got civilian supremacy, and Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was a strong advocate of it. When Pakistan came into existence, he reminded the armed forces that they were the servants of people. He also stated that you do not make national policy. It is we, the civilians, who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. He stated all this while addressing the officers of the Staff College, Quetta, on June 14th, 1948. Now, ask yourself this very question, that have we had civilian supremacy over here in Pakistan? And I'm not just talking about the martial laws. We all know the answer. At number 2, I've got role of bureaucracy. Bureaucracy is one of the most important institutions for any state. And Quaid-e-Azam knew that. So on March 25th, 1948, quote unquote, he stated that you are not concerned with this or that political party. That is not your business. You do not belong to the ruling class, you belong to the servants. And in another talk with the civil servants, ये April के अंदर अब दोबारा बात हो रही है 1948 के अंदर, he stated that you should not be influenced by any political pressure, by any political party or individual politician. Now, once again, another question. क्या हमारी bureaucracy जो है, is it the same? Is it not influenced? Is it not biased? Is it not, I don't know, corrupt का word मुझे use करना चाहिए? Let's not go down that road. We all know the answers to these questions. Anyway, at number 3, I've got freedom of speech because it's very funny. I happen to be in the media and ये तो मेरे ऊपर भी लागू होता है. तो खैर, Quaid was a strong proponent of freedom of speech and he encouraged constructive criticism of the state. So he stated that in Peshawar, in a college, he was addressing the students in a college in Peshawar in 1948, where he stated that praise your government when it deserves, but criticize your government fearlessly when the need arises. At number 4, I've got rule of law. Father of the nation stressed the significance of the rule of law, and in his speech on October 30th, 1947, he stated that maintenance and enforcement of law and order are prerequisites for all progress. रूल ऑफ लॉ की बात करना तो आयरनी है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि यहाँ पे अब तो 200 बंदा इकट्ठा होकर बंदे को आग लगा देता है. At number 5, I've got technical education. यार मुझे तो हैरत होती है, he was so far sighted. I love the guy, I admire the man. And क्योंकि देखें 1947 है, November 27th है, and Quaid-e-Azam एक स्पीच कर रहे हैं, अपना मैसेज दिया है, the importance of education and the right type of education. See, Collins, right type of education cannot be overemphasized. He knew it at that time कि यार मतलब आप जो कर रहे हैं कि नहीं. मुझे यहाँ पे सर सैयद अहमद खान की बात भी याद आती है. Trinity of ideas उन्होंने दिए थे, and he also was of the opinion that we need to acquire education. और हम जो कहते थे कि उस टाइम जी वेस्टर्न एजुकेशन करने वाला काफिर हो जाएगा, वो गलत बात थी ना, हम लोग पीछे रह गए उस वजह से. तो shouldn't have done. Technical education, scientific education, that's the need of the hour and that should be stressed upon. It should be overemphasized. At number 6, I've got educating the youth. It's very important because यार youth तो हमारी 50% से ज़्यादा की आबादी है इस टाइम. तो मार्च 1948 के अंदर and again 12 अप्रैल 1948 को जब वो स्टूडेंट्स ऑफ इस्लामिया कॉलेज पेशावर से खिताब कर रहे थे, तो he stated that your main occupation should be in fairness to yourselves, in fairness to your parents, and indeed in fairness to the state. To devote your attention solely to your studies, only then will you be an asset and a source of strength and pride for your state. Wow.
He was so far-sighted, मतलब mashallah. So this was about educating the youth, but have we educated our youth? Sadly, no. अच्छा जी, moving on. At number 7, I have got women empowerment. Wow, I love this one because मतलब ये सोचें कायदे आज़म कितने ज़्यादा far-sighted थे कि 70 साल पहले उनको ख़वातीन की इंपॉर्टेंस का पता था, और हम आज के दौर के अंदर 70 साल बाद भी यहाँ पे हमारे लोग हैं वो कहते हैं जी बुढ़िया नु घर बहा दो, भांडे बर्तन तुलाओ। खुदा का खौफ खाओ यार, क्या कर रहे हो? इन्होंने ही ग्रोथ लानी है, इन्होंने ही स्टेट अफेयर्स में अगर नहीं होंगी तो सक्सेस नहीं आएगा। हर लिहाज से मतलब वी नीड आवर वुमेन एट आवर साइड्स इफ़ यू वांट टू ग्रो। तो जी उन्होंने कायदे आज़म ने तो अपनी बहन को फातिमा जिन्ना उनके साथ नहीं ड्यूरिंग ऑल हिज स्ट्रगल्स। अच्छा, बट आई लव दिस वर्ड्स, his words actually, but listen to this. No nation can rise to the height of glory unless your women are side by side with you. We are the victims of evil customs. It is a crime against humanity that our women are shut up within the four walls of the houses as prisoners. Wow. Boom, mic drop. तो यार इसलिए प्लीज़ ख़वातीन को, हमारा पता है, मैं इसमें भी कुछ नहीं पढ़ूंगा कि आज का पाकिस्तान, ये तो जिन्ना का एनविजन पाकिस्तान था ना, ये भी हो जाता तो हम लोग कहाँ के कहाँ निकल जाते। तो इसलिए आई डू नॉट नीड टू डिबेट ऑन द फैक्ट कि आजकल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फाइनली एट लास्ट आई हैव गॉट यूनिटी. एवरीबडी knows about it, and each and every single one of you watching this video would have heard the words unity, faith and discipline. कहाँ गई यार वो तो? अच्छा खैर, उनके पास मेरे पास आगे कोटेशंस भी हैं जिसके अंदर उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया था कि यार प्रोविंशियलिज्म जो है एंड जो सेक्शनलिज्म है, मतलब ये जो हम सेक्टेरियन डिवाइड्स भी जो इवन कहते थे, ही वाज अगेंस्ट इट. तो यूनिटी नहीं रही, उससे हमने मार खाई है. अब हमें जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडाज हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं. हमारे जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं, दे आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर बिकॉज वी आर नॉट यूनाइटेड इनफ. सो दिस वाज अ बिट अबाउट व्हाट Jinnah had envisioned for us. This was Jinnah ka Pakistan, and sounds so beautiful, right? But the reality is completely the opposite.